Hello, students. Good evening. Good evening, sir. Evening, sir. Good evening, sir. Namaste, sir. Good evening, sir. Oh, you are enjoying the workshop? Yes, sir. How it is? Really nice and knowledgeable. So I think that will be a new experience to you guys. Yes, sir. Yes, sir. So later on, when the things will be in control, then we would like to have conferences, workshops in physical mode also. Correct? Then you will feel that all these things, they are quite important from scientific point of view. So anyway, you are much fortunate to have these type of things, especially in your first semester of BSc. Otherwise, when we compare our life with yours, then we go through these type of things only during our PhD programs. So you are not paying nothing or some fees there. Is it free for all of you? Yes, sir. So that is Yes, sir. very good thing. Okay. So anyway, if during this week, I think the number of classes held will be quite low. But in case a particular teacher is requesting you to manage class in some off hours, then try to cooperate with him or her. So today we are going to discuss some of the numerical problems. Correct? Because in physical chemistry paper, you can expect so many numerical problems. So therefore, it becomes mandatory to discuss numerical problems based on those topics that we have covered already. So in our discussion, we have derived this equation pi plus 3 upon phi square into 3 phi minus 1. This is equal to 8 theta. So this equation we have derived, and this equation was known as van der Waals reduced equation of state. So you remember? Let us also discuss the derivation, how we came to conclusion. So this is also known as law of corresponding states. Law of corresponding states. So how we came to that equation? So we divide pressure of a gas by its critical pressure. Then a new quantity we introduced pi. Volume of a gas divided by critical volume, new quantity we introduced phi, and temperature of a gas by its critical temperature, new quantity introduced by theta. So these pi, and theta were known as reduced pressure, reduced volume, and reduced temperature respectively. You remember? So we start with this van der Waals equation, P plus A upon V square into V minus B equal to RT. So then we replace the values of P and V by respective P, V and T in terms of PC, VC, TC. So value of P comes out to be equal to what? PC times pi. Value of V comes out to be VC times pi, and value of T comes out to be theta times TC. So when we substitute these values of P, V and T in their critical pressure, volume, temperature terms, then this equation comes out to be pi times PC plus A upon pi square VC square into pi times of VC minus B is equal to R theta TC. Then we have substituted the values of PC, VC, TC in terms of van der Waals gas constant. So on substituting these PC, VC, TC in terms of van der Waals gas constants, we have this new equation pi a divided by 27 b square plus a upon 9 phi square b square into 3 phi b minus b equal to r theta, and then 8 a upon 27 rb. So throughout this equation was divided by a upon 27 rb. Then we have this equation pi plus 3 upon phi square into 3 phi minus 1. This comes out to be equal to 8 theta. So it is 80 theta. Really it is 8 theta. Please note it. And this is known as van der Waals reduced equation of state.
And in this equation, we are having no quantities like A, B, P, C, V, C, T, C. And all these quantities A, B, P, C, V, C, T, C, these depends on characteristics of a gas. So no such quantity is there. It means this equation is quite general. So it means that it is applicable to all the substances, whether it is in liquid state or in gaseous state, and irrespective of the nature of the substance. So it means we can apply this equation to any of the substance, because it is not depending on what? It is not depending on A, because A is characteristic parameter of a particular gas. B is characteristic parameter of a particular gas, means the value of A and B will depend on what? Nature of the gas. PCVCTC, this will also depend on nature of the gas. It means that this equation is quite general one. We can apply it to gases, we can apply it to liquids also, irrespective of their specific nature. So this equation is clear that when two of the substances have same reduced temperature and same reduced pressure. So if we have same reduced temperature means theta and reduced pressure phi, then the value of pi will come out to be same. So this is known as law of corresponding states. You remember it. So now with the help of that equation, we are trying to solve out some of the numerical problems. What is the use of this equation? Clear? Let us see, discuss this problem. So the reduced volume pi, numerical problem is the reduced volume pi and reduced temperature theta of a gas are 10.2 and 0.7. So we have given the value of phi, we have given the value of theta, and what will be the reduced pressure if the critical pressure PC is 4.25 atmosphere. So simply we have to calculate the value of value of this reduced pressure. We are given the value of critical pressure. Let's see how we can solve it. Reduced volume phi is given 10.2, reduced temperature theta is given 0.7, critical pressure is given PC is equal to 4.25 atmosphere. Then apply this reduced equation that we have recently derived. Excuse me, sir. Yes, Screen is not visible. screen is not visible Yes, sir. for all students. No, sir, No, we sir. can. No, Yes. sir. No, sir. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think some network problem you might be facing. So please. Okay, sir. So we have given this value phi, we have given value of theta, we have given value of PC critical pressure. Then we have to apply this reduced equation of state. So this reduced equation of state is pi plus 3 upon 5 square into 3 phi minus 1. This comes out to be 8 theta. And you have to remember it next time. So on substituting the values, we are having phi, we are having theta. So we are substituting the value of phi and theta. Then only the variable is, unknown variable is pi. So pi plus 3 upon 10 plus 2 square into 3 into 10.2 minus 1. This is equal to 8 into 10 to into 0.7. So we are having pi plus 3 upon 10.2 का square होगा 104.04, then it is 30.6 minus 1, and this comes out to be equal to 5.6. So pi plus, when we divide 3 divided by 104, the quantity comes out to be 0.0288, and then when we subtract 1 from 30.6, then 29.6 is the value. It is equal to 5.6. So on solving this equation, the value of pi we are having. So in this way, we are able to calculate the value of pi. But what we have to report? We have to report pressure. What is the pressure? If pi is given, pi is calculated, and PC is given, then we have to make use of this equation. The initial assumptions P by P is equal to pi. P by P is equal to pi, means reduced pressure. So this is the relationship between critical pressure, normal pressure, and reduced pressure of a gas. So from this equation, P is equal to pi times of PC. So pi means, what is the value of pi?
3.14. 32/7. 8.14. That pi is not that one. We are talking about this pi that we have calculated 0.16. 0.16. So in place of pi we are having 0.16, and in place of PC we are having 4.25. PC is already given. So this is critical. This comes out to be pressure of the gas 0.6816. Correct? So like this you can calculate any of the unknown parameter if two parameters are given to you. If volume is to be calculated, then VC will be given to you. If temperature is to be calculated, then TC will be given to you, other than the other two parameters that are needed to solve these type of equations. किसी को कोई doubt है इसमें? No, sir. Quite simple. No, Next. sir. Next question is the critical temperature of hydrogen gas. Critical temperature means TC. TC is 33.2 degree centigrade and its critical pressure is 12.4 atmosphere. Find out the values of A and B. Find out the values of A and B. So, critical temperature is related with van der Waals gas constants because this question is just in between critical parameters and van der Waals gas constant. Critical gas constants and van der Waals gas constants. So critical temperature जो हमने ड्राइव किया था that was equal to 8A/27 RB. You remember? Relationship between Yes, sir. critical gas constant and van der Waals gas constants. अपना नोट्स बना लेना सब लोग. इनके डेरिवेशंस आने चाहिए, एग्जाम में डेरिवेशंस भी आएंगे कि ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन टीसी, वीसी, पीसी एंड van der Waals गैस कांस्टेंट. और आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज नॉट करेक्ट. टीसी की जगह में 8A/27 RB में इसमें से बी को गायब कर दूंगा, आर को गायब कर दूंगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर कि व्हाट फॉल्ट इज देयर इन दिस रिलेशनशिप. सो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो असेसमेंट में हम डालेंगे, you can have that type of questions there. Got it? So exact values you have to remember. TC is equal to 8A/27 RB. PC is equal to A/27B square. So TC का जो रिलेशन होता है क्रिटिकल गैस कांस्टेंट यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, वो van der Waals गैस कांस्टेंट से 8A/27 RB. This relation is to be used. इसी तरह से जो PC है, PC is related to van der Waals gas constants by this function. PC is equal to A/27B square. अब हम क्या करेंगे? We have to divide 1 by 2. 1 by 2. So TC by PC will be equal to what? 8A/27 RB times 27B square upon A. So on cancellation 27 to 27 cancelled out, B to B square में से एक टर्म cancel out होगी, A to A cancel out होगी. So this ratio TC by PC, it comes out to be 8B/R. It comes out to be 8B/R. और जो TC है, TC is given to you 33.0 degree centigrade. So you have to convert it into Kelvin. So in Kelvin, how you can convert? 273 ऐड करना होता है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए. So in Kelvin, temperature comes out to be 306.2. And TC, this is 12.4. R is given to you 0.082 atmosphere per liter per Kelvin per mole. तो आप जब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे TC की और PC की, TC is given to you 306.2. TC is given to you. Temperature is given to you 306 because 33.2 is what? In Kelvin. Degree Celsius. And PC is given to you 12.4. This comes out to be 8. B you have to calculate and divided by R. Value of R is to be used 0.082. So like this, we can calculate the value of B equal to 0.253 liter per mole. Now B we are having. So if we substitute the value of B in any of the value, whether it is TC or PC, suppose we are using TC relationship. So TC is equal to 8A/27 RB. We are having the value of TC. We are having the value of this B.
then A can be calculated because R is already known to us. So TC is 306.2 and 8A divided by 27 R 0.082 multiplied by 0.253. Like this, we are able to calculate this van der Waals gas constant parameter A also. We have calculated B, we have calculated A. So this calculation of A, we can do in another way. How we can do? We can use another relationship. We have used this PC. We have used this TC relationship. In case PC is known to us, then PC relationship can also be known to. So like this, we can calculate these van der Waals gas constants. So any doubt till now? No, sir. No, sir. No, sir. But one thing I would like to comment, while using the units, while using the values of gas constant R, जब आप R की वैल्यू यूज करते हो तो R कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ वैल्यूज. Sometimes it is 8.321, sometimes it is equal to 0.82, correct? तो ये जो R की वैल्यूज हैं, R की गैस कांस्टेंट की आपको यूनिट्स याद करनी है. क्या करनी है? यूनिट्स याद करनी है कि R जब आपका 8.32 लीटर एटमॉस्फेयर है, यानी कि जब आप लीटर्स में वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में मेजर कर रहे हो, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ दैट वैल्यू ऑफ आर, करेक्ट? और अगर आपका जो है टेम्परेचर केल्विन में है, करेक्ट, देन इन दैट सिचुएशन आर इज इक्वल टू 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल. सो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ यूनिट्स ऑफ आर. आप जैसे ही आर की यूनिट्स चेंज करोगे तो आर की वैल्यू भी चेंज हो जाती है. और कौन सी आर की वैल्यू यूज हमें करनी है न्यूमेरिकल्स में? वी हैव टू मेक यूज ऑफ दैट वैल्यू ऑफ आर whose units matches with the units of the parameter given in that particular numerical problem. समझ आया? आप केल्विन में टेम्परेचर यूज कर रहे हो तो केल्विन वाली आर की यूनिट यूज करोगे, करेक्ट? प्रेशर एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे हो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर वाली आर की यूनिट यूज करोगे. समझ आया आपको? So this is one of the fault that can be observed from most of you guys. समझ आया मैंने क्या बताया? सर ये Yes, आर में sir. कैलोरी के हिसाब से भी कोई यूनिट है? क्या? कैलोरी के हिसाब से सर आर की वैल्यू? आप जो है इसकी जो यूनिट्स है ना, इनको किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर लो तो आपको न्यूमेरिकल में इसकी तो बहुत सारी टाइप की यूनिट हम बना सकते हैं. आर की दो तो जनरली चलती हैं, 8.321 एंड 0.08. 0.82. तो अब कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, आर्क जूल जो भी कुछ है, जूल कैलोरी, कैलोरी वो एनर्जी की यूनिट में कन्वर्ट कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी. बट वो वैल्यू आप तभी यूज करोगे, कब यूज करनी है तुम्हें? जब ये एनर्जी के हिसाब तब से. वो वहां पे कैलोरी वाला कुछ कॉन्सेप्ट चल रहा होगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर. ओके सर. यस सर. So you have to keep in mind while making use of this value of R, कि what type of units are there in your numerical problem for different parameters. You have to match these units with those the units of R. समझ आया? और एक बात मेरी याद रखना सब लोग, कभी ऐसी जगह पे अगर कोई कंफ्यूजन आता है माइंड में, सो वहां आप ये सोचना कि मतलब मान लो कि आपके साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपके पास कुछ एप्पल्स है, कुछ ऑरेंजेस हैं, कुछ बनानास हैं. कोई पूछने लगा कि टोटल कितने एप्पल्स हैं, तो आप एप्पल को एप्पल के साथ ऐड करोगे, एप्पल को बनाना के साथ ऐड नहीं करोगे. समझ आया? तो जो सेम यूनिट्स होती हैं वो आपस में ऐड कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं. यू गॉट माई मैसेज? Yes, sir. Yes. Yes, sir. जैसे सॉल्वेंट्स में कहा जाता है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक, ऐसे ही यूनिट्स का भी सीधा सीधा फंडा ये है कि लाइक कैन बी एडेड टू लाइक, लाइक कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम लाइक, लाइक कैन बी डिवाइडेड बाय लाइक. ये मैसेज मेरा आप थोड़ा माइंड में रखना कभी भी.
जब भी कंफ्यूजन हो यूनिट्स के बीच में कि कौन सी वैल्यू यूज करनी है हमें। और ये मैसेज मैंने एक बार पहले भी दिया था, डू यू रिमेम्बर? जब हमने ए और बी की वैल्यूज निकाली थी, ए और बी की यूनिट्स निकाली थी, उस टाइम पे क्या किया था? वंडरवाल इक्वेशन थी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर। तो मैंने कहा था कि इधर P की यूनिट्स हैं तो ए अपॉन वी स्क्वायर की यूनिट्स भी प्रेशर वाली होनी चाहिए। वहीं से यूनिट्स रिड्यूस की थी ना मैंने ए की। यस सर। तो P यानी कि प्रेशर को प्रेशर में जोड़ा जा सकता है। सो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर का मतलब है ए अपॉन वी स्क्वायर की जो यूनिट्स हैं वो प्रेशर वाली यूनिट्स होनी चाहिए। तो ए अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू मैंने प्रेशर की यूनिट रख दिया था, फिर वॉल्यूम को उधर कर दिया था, वहां से ए की यूनिट्स हमने ड्राइव की थी। यू रिमेम्बर, यहाँ नोट्स में मैंने दिया हुआ है सबको। यू गॉट इट? नेक्स्ट, ये जो मैंने आज आपको एक बात बताई है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। एक ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 1 मोल ऑफ डाइथाइल ईथर ऑक्युपाइज 15 लीटर, यानी कि एक टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर पर डाइथाइल ईथर का वॉल्यूम आपको गिवन है, यानी कि T इज गिवन टू यू, वॉल्यूम इज गिवन टू यू। कैलकुलेट द प्रेशर इफ वैन डर वाल गैस कांस्टेंट्स फॉर डाइथाइल ईथर आर। ए की वैल्यू दी है आपको, बी की वैल्यू दी है, तो ये एटमॉस्फेयर लीटर वाली है, तो यहाँ पर जो आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो ये 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। समझ आ रहा है ना कहां से पता चल रहा है? क्योंकि ए और बी में जो ओके सर। units आपने ड्राइव की हैं दे आर इन लीटर एटमॉस्फेयर, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर वाली पर केल्विन वाली जो यूनिट है आर का, दैट इज वैल्यू इज इक्वल टू 0.821। तो आपको पता ही है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये n नंबर ऑफ मोल की बात है, तो वंडरवाल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू nRT। तो यहां से इस इक्वेशन का अगर हम प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले तो वी माइनस एन बी को ऐसा इधर डिनोमिनेटर में ले जाओगे, nRT डिवाइडेड बाई वी माइनस एन बी, इधर डिनोमिनेटर में ले जाने के बाद क्या बचेगा? P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, फिर आप ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर में को इधर राइट हैंड की तरफ ले जाओगे, राइट हैंड की तरफ ले जाओगे तो डेफिनेटली इसका साइन चेंज होगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड में ये प्लस साइन में है, उधर माइनस में जाएगा। तो प्रेशर जो है वंडरवाल गैस कांस्टेंट से इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस फॉर्मूला। अब आपको क्या है कैलकुलेट प्रेशर? प्रेशर कैलकुलेट करना है सीधे सीधे, वंडरवाल ए बी की वैल्यू दी हुई है आपको, और इसमें ये आपके पास वॉल्यूम दिया गया है, V की भी वैल्यू है, टेम्परेचर की भी वैल्यू है, गैस कांस्टेंट R भी है, सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर नोन टू यू, सो सिंपली सब्स्टिट्यूट देयर वैल्यूज। तो ऐसे बच्चों को पता तो चल जाता है कि ये फॉर्मूला यूज होगा। इसके बाद यहाँ आके थोड़ा सा अटक जाते हैं बच्चे कि टेम्परेचर हम डिग्री सेंटीग्रेड में यूज करें, किस में करें। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जो टेम्परेचर है वो 227 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इसको एज इट इज क्यों नहीं यूज किया हमने T? क्योंकि हमें एक सिमेट्री मेंटेन करनी है। उधर देखो टेम्परेचर की क्या यूनिट्स यूज की आपने आर में, देखो, वेट फॉर ए मोमेंट, ये मेरा केल्विन, केल्विन। रुक जाओ, केल्विन सर। आपको बता रहा हूं सुनो। ए और बी के जो यूनिट्स गिवन है, ए और बी की यूनिट्स ने आपको फोर्स किया कि आर की ये वाली यूनिट यूज करनी है, आपको ये वाली क्वांटिटी यूज करनी है, ये वाली वैल्यू यूज करनी है, फोर्स किया ना, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी। यस सर। उन्होंने फोर्स किया कि नहीं नहीं, आर आपको 8.32 वाला नहीं, आर आपको ये वाला यूज करना है, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन वाली। अब आर की इस वाली वैल्यू में जो टेम्परेचर है वो पर केल्विन है, वो पर डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। इसका मतलब है कि अब आपको टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप आर की ये वाली वैल्यू यूज करना चाहते हो तो। इसी वजह से मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि दिमाग काम नहीं करता है कि आर को डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें या केल्विन में यूज करें। तो ऐसी सिचुएशंस में यहाँ से अपने आप ही आंसर मिल जाता है चीजों का।
जितने भी हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं उनकी जो यूनिट्स हैं उनमें एक कोरिलेशन मेंटेन करना पड़ता है, एक सिमेट्री मेंटेन करनी पड़ती है। हमने इसी वजह से जो है टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड से किस में कन्वर्ट किया है, केल्विन में। तो ये वाला जो मैसेज आपको आज यूनिट सिमेट्री का दिया है ना, आई थिंक कि पहले कभी शायद नहीं बताया हो आपको कि क्यों यूज कर रहे हैं इस टाइप की यूनिट, आर की यही वैल्यू क्यों यूज होगी। सो आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड नाउ। ये एक जनरल डिस्कशन है, कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बीच में क्या है, एक सिमेट्री मेंटेन करनी होती है। जितने भी अननोन पैरामीटर हैं दे शुड बी ऑन दी सेम units, they should be expressed in the same type of units। आर आपका पर केल्विन है तो आपको डेफिनेटली टेम्परेचर को भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रिया गोयल, some problem is there? No, sir. अच्छा, hey, from where you got these 1 2 1 1 2 2 1 2 3, these are the numbers you have assigned? Okay, this meeting is going to be stopped very soon, so I would like to close this session. Okay, and then please join again.